Hello everyone, welcome back to Vidyastra. Today we are going to discuss another question from JEE Mains 2021, that is from the chapter Straight Lines, which lies under the mathematical concept of coordinate geometry. So let's solve this question. Here it is given that the number of integral values of m, so that the axis of the point of intersection of these lines and is also an integer. मतलब दो लाइन्स हैं, पहला लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, दिस इज वन ऑफ आवर लाइन्स. अनदर लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस 1. सॉरी, दिस इज आवर सेकेंड लाइन. हमें ये बताया जा रहा है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है, मतलब एब्सिसा है, वो एक इंटीजर है. This is an integral value. This is an integral value. What we need to find? So we need to find the possible values of m such that this is an integral value. This is also an integer and this is also an integer. So let's solve these two equations. 3x plus 4 times y के जगह पे मैं पूरा कुछ कर सकता हूँ. mx plus 1 equal to 9. 3x plus 4mx plus 4 equal to 9. 4 उस तरफ गया तो equal to 5 हो जाएगा. x कॉमन ले लिया तो 3 plus 4m equal to 5. Then x equal to 5 divided by 3 plus 4. This is the value of x. Now x अगर आपको इंटीजर चाहिए तो ये 5 डिवाइडेड बाय दिस, ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि 5 एक इंटीजर है. मतलब 3 plus 4m should be a value such that 5 becomes an integer. ये वैल्यू कब इंटीजर बन सकता है? जब 3a plus 4m का वैल्यू या तो 5 हो जाए, 5 by 5 1 बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा. -5 हो जाए तो 5 डिवाइडेड बाय -5 -1, दैट इज आल्सो एन इंटीजर. 1 हो, 5 by 1 is 5, then it is also an integral value. -1 हो, that is also that will also be correct value. We have only these 4 values, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे. 3 plus 4m equal to 5, if then 4m equal to 5 minus 3 2, m will be equal to 1 by 2. So this is not giving an integral value, this is a rational number. 3 plus 4m equal to minus 5, 4m equal to minus 5 minus 3 minus 8, m equal to minus 2 by 1, that is minus 2. This is giving an integral value. 3 plus 4m equal to 1, then 4m equal to 1 minus 2 minus 2, m equal to minus 1 by 2. This is a rational number, so 1 is also eliminated. 3 plus 4m equal to minus 1, 4m equal to minus 1 minus 3, 4m equal to minus 4, m equal to minus 1. This is giving an integral value. So there are two possible values of m, that is ये नहीं है, ये दोनों. तो पूछा क्या है? पूछा है the number of integral values of m. इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m कितने हैं? 1 है, 2. So option B is your right answer. So this is our answer C. हमें ये थोड़ा सा रिटर्न टाइम मेथड से किया है. It's a very basic question based on the chapter straight line. So मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.